Hello and welcome to Mech Zone. Today we shall be discussing about a very simple topic in strength of materials where mostly people are generally confused with the sign conventions, and we will be telling or we will be solving a simple and a very important question which has been asked in the previous gate year examination, and we shall be learning how to use the sign conventions, and we will be using the same sign conventions in every question that we will be solving in the future. So before starting this lecture, I would simply like to request you to kindly subscribe to my channel and also press the bell icon so that all the important updates are given to you at the earliest as possible. And you can also follow me on the platform of Unacademy. I am a verified educator there, and my courses are also available on this platform. Currently I have 2 courses for fluid mechanics, so you can go and check out those courses. So let us discuss a question here which has been given, and this question has been asked in GATE 1993. Okay, this question has been asked in GATE 1993, and the question says, a point in a stressed body, the state of stress on the 2 planes 45 degrees is shown in the figure. This is an oblique plane. Okay, this is an oblique plane, and on this oblique plane the state of stresses have been given. That means we have this normal stress on this oblique plane, that is, it will be sigma theta, and this is the shear stress, that is tau theta. Okay, so sigma theta and tau theta on this oblique plane have been given. This is actually the x phase, as we have already discussed in the lectures of strength of materials. This is 8 megapascal, that means it is a tensile load, and this will be simply sigma x. Okay, now this has been given as 3 megapascal, and this is nothing but from the direction it is a tau xy, that is shear stress on the x phase, which is equals to 3 megapascal. Now this is the very simple problem. What we have to determine is we have to determine the principal stresses, that is sigma 1 and sigma 2 needs to be determined from this question. Now what we will do is we will select a suitable sign convention which will be followed throughout. However, ये जो sign conventions होते हैं ये कभी भी absolute नहीं होते, ये हमेशा relative होते हैं. That means you can choose them as per your convenience. मैं clockwise अगर positive ले रहा हूँ तो आप anti clockwise positive ले सकते हैं, इसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी. वो अलग अलग टीचर्स का अलग अलग कन्वेंशन होता है. ओके, सो आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर, and I will tell you all the relevant sign conventions, and in future I request you to use only those sign conventions so as to avoid any sort of confusion. Now the sign conventions I have already discussed here. I have taken tau theta, that means the shear stress on the oblique plane. When I am writing theta, it is referring to the oblique plane. Okay, so tau theta, if it is in the anti-clockwise direction, it becomes positive. Theta, that means the angle of the oblique plane, if it is taken anti-clockwise, from where? It is taken from the x phase. If it is taken in the anti-clockwise direction from the x phase, I am going to consider it to be negative. Okay, where tau theta is the shear stress on the oblique plane and theta is the angle of the oblique plane which is measured from the x phase. Now I have drawn a complementary shear stress. We already had this shear stress. Now I drew this complementary shear stress in order to complete a pair. Okay, so from these 2 shear stresses we can say that they are acting in the anti-clockwise direction. Okay, anti-clockwise direction on this oblique plane. So from our sign convention, if it is in the anti-clockwise direction, we are going to consider it as positive. So this 3 megapascal will be taken as plus 3 megapascal because it is acting in the anti-clockwise direction on this oblique plane. And theta, as we all know, it has been given 45 degrees from the x phase. This is the x phase and it has been given 45 degrees. So we are going to take theta equals to minus 45 degrees because it has been given in the anti-clockwise direction from the x phase. Okay, so these sign conventions are to be used in this particular question. Now let us solve the question and first write down all the data that has been given to us according to the sign conventions that we have decided. Now we have been given that
the normal stress, that is sigma theta, this is equal to, we all know the formula for it, sigma x plus sigma y by 2 plus sigma x minus sigma y by 2 cos 2 theta plus tau xy sin 2 theta. Now this is the formula to evaluate the normal stresses on the oblique plane. Now here let us write down first that sigma x has been given as 8 megapascal. Okay, sigma y is unknown here. Theta has been given as minus 45 degrees. Tau xy, it has been given. Now when the tau xy is in the clockwise direction, shear stress on the x phase is given in the clockwise direction. It will rotate this phase in the clockwise direction, so we will consider it as positive. This is also a sign convention that we will be using here. So this would be a positive value, and its value would be how much? Yes, 3 megapascal. Okay, so we are going to take it as plus 3 megapascals. Okay, so by using all these things, and sigma theta has been given as 2 megapascal. Okay, so if we keep all these values here in this equation and we will solve, we will find out the value of sigma y. So the value of sigma y will come out to be 2 megapascal. If you solve, it will come out to be 2 megapascal. Please mind that you have to keep थीटा एज माइनस थीटा. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा मतलब माइनस साइन 90 हो जाएगा. इस चीज को बस आप ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे. ओके, नाउ वंस यू हैव इवेल्युएटेड सिग्मा एक्स, तो आपको दिया ही हुआ है, सिग्मा वाई यू हैव इवेल्युएटेड. नाउ वी विल फाइंड आउट व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ सिग्मा 1 कॉमा सिग्मा या सिग्मा 1 कॉमा 2. ये हो जाता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई होल स्क्वायर. ओके, वी हैव बीन गिवन टाउ एक्स वाई होल स्क्वायर. सो सिग्मा एक्स हैज बीन गिवन, सिग्मा वाई हैज बीन गिवन, टाउ एक्स वाई भी आपको दिया हुआ है, दैट इज पॉजिटिव 3. ओके, पॉजिटिव 3 दिया हुआ है. तो जब ये हम सारी वैल्यूज रखेंगे तो जो हमारा सिग्मा 1 है, sigma 1 is coming out to be 9.24 megapascals and sigma 2 जो आ जाएगा, सॉरी sigma 1 हमारा 9.24 है और sigma 2 आ जाएगा 0.76 megapascal. तो ये तो जनरल फॉर्मूला था जो हम लोग यूज करते ही हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को इवैल्यूएट करने के लिए. यहाँ हमें सिग्मा वाई अननोन था, तो ये हमारी बेसिक इक्वेशन जो कि हमने इक्विलिब्रियम से निकाली थी किसी भी प्लेन पे, उससे हमने निकाली. तो यहाँ पर हमें सिग्मा वाई पता चल गया, सिग्मा वाई पता चल गया, सिग्मा एक्स हमें पता है. सो वी विल बी इवैल्यूएटिंग सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2. The only thing that needs to be remembered here is that we have been given this angle in the anti-clockwise direction, so it will be taken negative. This shear stress on the oblique plane that we have been given is actually in the anti-clockwise sense. So anti-clockwise sense shear stress is taken as positive. Tau theta will be taken as positive. ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और इसीलिए हमने इसे क्या लिया है, +3 ले लिया है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा. और हमारा जो x फेज है, ये हमारा x फेज होता है, ये हमारा y फेज होता है. कुछ लोगों को अगर लगे ये नहीं है तो मतलब वर्टिकल लाइन है, ये x फेज कैसे हो गया. So actually this is the x axis, this is the y axis. तो x axis के along जो फेस आए, मतलब x axis के परपेंडिकुलर जो फेस है वो x फेज हो गया और y axis के परपेंडिकुलर जो फेस हो गया वो y फेज हो गया. ठीक है, सो यही कन्वेंशन है जो हमें यूज करना है. तो यहाँ से हमने सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यूज निकाल ली है. However, if we are asked to find the diameter of the molar circle, वो भी हम निकाल सकते हैं. radius of the molar circle वो भी हम निकाल सकते हैं. सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 कर देंगे. डायमीटर निकालना है तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 हो जाएगा. दैट इज अ वेरी वेरी सिंप्लीफाइड क्वेश्चन. नाउ आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग ऑल आवर वीडियोज. एंड जैसा कि हमने अपने लाइव सेशन में बताया था टेस्ट सीरीज के बारे में, फिर हमने एक वीडियो भी अपलोड किया था कि वी हैव नाउ स्टार्टेड ऑफ विद द टेस्ट सीरीज. सो आप ये टेस्ट सीरीज जल्दी से बाय कर लीजिए
और इस टेस्ट सीरीज को हमारे गिवन लिंक से ही अगर आप बाय करेंगे तो ही आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। ऑलराइट, तो आप ये टेस्ट सीरीज हमारी बाय कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पड़ा हुआ है। ओके, तो आप डायरेक्टली उस पर क्लिक कर लीजिए और आपको वो लिंक डायरेक्ट हो जाएगा, वहाँ से जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। क्योंकि टेस्ट सीरीज तो नेसेसरी है, बिकॉज एज द एग्जाम्स आर अप्रोचिंग आपको टेस्ट जो है वो फ्रीक्वेंसी थोड़ी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। तो फॉर दैट यू डेफिनेटली नीड अ गुड टेस्ट सीरीज। ओके, सो सब्सक्राइब, स्टडी एंड सक्सीड, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी। थैंक यू सो मच।